Dear students, today I am going to tell you about mass spectrometry, and this is part 3. In this I am going to tell you principle in detail, and it will include fate of a starting compound, rules of fragmentation, and variety of peaks obtained. I have already explained this. This is the instrumentation part, and details of source and analyzer and detector will be taken care of in my next lectures. Now, the mass spectrometer is especially designed to study ions in gas phase. It is commonly used for creation of mass spectra for a generally analytical purpose. For example, it allows the examination of fragmentation pathways of selected ions for the study of ion neutral reactions and more. Understanding fundamentals of analytical chemistry is prerequisite for the proper application of mass spectrometry with all technical facets available, and for the successful interpretation of mass spectra, because analytical chemistry is the application of physical chemistry to the real world. Now, mass spectrometry is an extremely useful technique as it can provide fairly detailed information about the structure of molecules with very small amount of the substance. Amount कितना लिया जा सकता है? कम से कम 10 to the power minus 6 to 10 to the power minus 9. ये नैनोग्राम हो गया, ये माइक्रोग्राम हो गया. माइक्रो और नैनोग्राम में क्वांटिटी ली जा सकती है सैंपल की या एनालाइट की, और उससे उसके बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता किया जा सकता है. The technique essentially involves production of ions of the sample material, their separation on the basis of their mass to charge ratio, and finally determination of relative abundance of each ion. क्या होता है? आयंस बनते हैं, जो भी एनालाइट लेते हैं उसका सेपरेशन होता है मास टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग, एंड फाइनली उनका हर आयन का, जो आयंस बनाए गए हैं उनका रिलेटिव अबंडेंस, कौन सा आयन कितना है, ये भी पता किया जाता है. अ मास स्पेक्ट्रोमीटर has 3 basic components: source of ions, an analyzer, and a detector. The simplest process occurring in the mass spectrometer is the interaction of electrons with the parent molecule. एनालाइट का पेरेंट मॉलिक्यूल जो इंट्रोड्यूस किया गया है उससे इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन होता है, और कुछ और इलेक्ट्रॉन्स फिर एनालाइट से रिलीज होते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच रेडिकल कैटायन इज ऑब्टेन्ड. कैसे होता है ये देखिए. M इज द पेरेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन इज E shown by E minus, एंड दिस इज़ द बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन जो इसके ऊपर डाला जा रहा है, और फाइनली फिर M प्लस रेडिकल कैटायन फ्रॉम द पेरेंट कंपाउंड forms, and 2 electrons, we get 2 electrons in the end. One bombarding electron है plus 1 electron removed from the this parent compound. तो ये बेसिक थिंग है जो हो रही है मास स्पेक्ट्रोमेट्री में. इफ द मोलिकुलर आयन इज सफिशिएंटली स्टेबल टू अकॉर्ड इट a lifetime of 10 to the power minus 5 seconds. अगर 10 to the power minus 5 seconds तक ये रेडिकल रह पाता है, तो it will be successfully accelerated and recorded at its corresponding M by E value.
In such situation, a single peak mass spectrum, peak mass spectrum, which is plotted in the form of ion current as a function of mass to charge ratio, is obtained. ये आयन अगर इतनी देर तक रुक जाता है तो उसको एक्सेलरेट कर लिया जाता है, जो कि डिटेक्टर तक पहुंच जाता है। M/E वैल्यू के अकॉर्डिंगली उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है और इस तरह से एक सिंगल पीक मास स्पेक्ट्रम मिलेगा, जिसे प्लॉट किया जाएगा आयन करंट के हिसाब से, आयन करंट के फंक्शन और मास टू चार्ज रेशियो की एक ग्राफ बनाया जाएगा और पीक मिल जाएगी, सिंगल पीक। द मेजॉरिटी ऑफ आयंस हैव सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ज़्यादातर आयंस में सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है। डबली और ट्रिपली चार्ज आयन, ऐसा नहीं है कि डबली और ट्रिपली चार्ज आयंस नहीं बनते हैं, दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट particularly for metal complexes. Doubly charged ion will appear at half the M/E value of that of singly charged ions. अगर किसी आयन को एक सिंगल चार्ज मिलेगा और उसी को डबल चार्ज मिल गया, दो इलेक्ट्रॉन्स उसमें से रिमूव हो गए, तो वो फिर उसकी पीक जो है वो उसका M/E वैल्यू जो होगा सिंगली चार्ज के वैल्यू से हाफ होगा। Since the molecular ion has effectively the same mass as parent compound, it is the ion with highest M/E ratio in the mass spectrum. It is thus possible to determine the molecular weight of the compound from high M/E value in the mass spectrum. अब यहाँ पे मॉलिकुलर वेट तो कॉमन है, मगर आयन जो सबसे ज़्यादा जिसका रेशियो है, हाईएस्ट M/E रेशियो जिसका है, उसकी वजह से उसका मास भी पता किया जा सकता है, आसानी से पता हो जाता है। द डबली चार्ज्ड और इवन ट्रिपली चार्ज्ड आयंस गिव पीक्स बिटवीन द इंटीग्रल वैल्यूज़। सिंगल पीक के बीच में इंटीग्रल वैल्यू में हमें डिफरेंट पीक्स मिलेंगी, जो कि हाफ M/E पे होंगी अगर डबली चार्ज है, और लाइकवाइज और रिड्यूस्ड वैल्यू पे ट्रिपली चार्ज्ड आयंस मिलेंगे। द ऑर्डर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कितनी एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, वो पाई बॉन्ड, फिर नॉन कॉन्जुगेट दिस इज सिग्मा बॉन्ड, देन उसके लिए सबसे कम चाहिए, फिर नॉन कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड, देन कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड, फिर लोन पेयर। इस तरह से एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करना है तो ये बॉन्ड्स हैं जिनमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी लोन पेयर के लिए, फिर उससे कम कॉन्जुगेटेड पाई, फिर नॉन कॉन्जुगेटेड पाई, और सबसे कम जो है वो सिग्मा बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए चाहिए होती है। मॉलिकुलर आयंस also on bond cleavage give smaller ions which are called fragment ions. Molecular ions का fragment हो जाता है और वो fragment ions कहलाते हैं। Fragment ions are obtained by homolytic और hemolytic bond cleavage. दो तरीके के क्लीवेज हो सकते हैं बॉन्ड्स के, ये बॉन्ड्स का नाम बताया आपको। तो उनमें जो क्लीवेज होगा वो होमोलाइटिक या हीट्रोलाइटिक होगा। Homolytic bond cleavage is indicated by fishhook arrow signifying the transfer of a single electron. For hemolytic cleavage, conventional arrow is used to indicate transfer of a pair of electrons. Homolytic में single electron remove होगा, जबकि heterolytic में दो electrons remove होंगे। और examples आप देख रहे हैं homolytic cleavage का CH3, CH2, CH, CH2 ये फ्रैगमेंट ये मॉलिकुलर कंपाउंड है,
देन मॉलिक्यूल है और ये इस तरह से फ्रैगमेंट होगा इसका CH3 CH2 CH2 एंड प्लस. हेटेरोलाइटिक क्लीवेज CH3 CH2 ब्रोमीन प्लस के साथ ये आयन है और इसका फर्दर फ्रैगमेंटेशन CH3 CH2 एंड प्लस ब्रोमीन में हो जाएगा. तो ये एक एग्जांपल है होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज का. कहने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर आयन एक बार बन गया तो वो फर्दर फ्रैगमेंटेड होगा और उसमें और भी वैरायटी के क्लीवेज हो सकते हैं. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड इज आयोनाइज्ड एंड फ्रैगमेंटेड टू यील्ड carbon dioxide plus CO plus O2 plus O plus C plus and gives a mass spectrum with peaks at M by E values of 44, 28, 32, 16 and 12 respectively. ये एग्जाम्पल्स आपको दे रहे हैं कि कैसे किसका क्लीवेज हुआ और कैसे उसका फ्रेगमेंटेशन होके कैसी कैसी पीक्स मिली. Other minor peaks corresponding to other natural isotopes, for example, C13 plus M by E is 13 and CO2 plus M by E 45 are also detectable as minor peaks. ये कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रैगमेंटेशन और उनकी पीक्स के बारे में आपको एग्जाम्पल दिया गया है. When producing ions by electronic bombardment, the degree of fragmentation of a molecule depends on the energy of bombarding electrons. Obviously, जब electronic bombardment है तो उनमें कितनी electrons में जितनी energy हुई उस तरह से fragmentation हो पाएगा. At low energies, 1 to 2 into 10 to the power minus 18 joules, only a single electron is removed from the molecule and resulting charged molecular ion has M by E value almost identical with the parent molecule. At the generally used operating beam of energy 10 to the power minus 17 joules, the molecules undergo cleavage into positively charged fragments of different masses. The fragmentation pattern is characteristic of the compound being examined and is referred to as cracking phenomena. ये खास बात है कि फ्रैगमेंटेशन पैटर्न भी एक फिक्स है और वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कंपाउंड्स का और दिस इज नोन एज क्रैकिंग फीचर. Thus on fragmentation, several peaks or lines corresponding to M by E values of positively charged ions are obtained. The height of peaks give relative abundance of the molecular ions and fragment ions. Here I must draw M by this line. Okay. Now next slide. Thus the mass spectrum of fragmented compound provides two types of information. Firstly, the molecular weight of the compound and the mass of various fragments produced from the molecular ion. Secondly, from the ions detected in mass spectrum, it is often possible to get information regarding the possible structure of molecule involved. For example, for triatomic molecule RST, 4 different types of fragment ions may be obtained.
which are, if the bond RS undergoes cleavage, uh, you will see R plus and St dot R and St plus. Or if S dash T bond breaks, then the fragment obtained will be RS plus and T or RS plus T plus. आप ये देख सकते हैं, इस तरह का फ्रेगमेंटेशन होगा. Then more than one type of cleavage may occur. For example, RS may undergo fragmentation to give R plus and S or R and S plus. So mass spectrum of RST may include some or a few of or all the ions of the molecular ion RST plus. It may be noted that fragmented RT is not produced. Fragmented RT कहीं पे भी नहीं बना है, which implies that structure of the compound is RST and not SRT. तो स्ट्रक्चर के बारे में कुछ आप आइडिया लगा सकते हैं उसके फ्रेगमेंटेशन से, क्योंकि R जो है S के साथ जुड़ा है, S R के साथ नहीं जुड़ा हुआ है. किस तरह से है सीक्वेंस, सही सीक्वेंस क्या है RST, क्योंकि जो भी फ्रैगमेंट्स हैं उनसे ये आइडिया लगता है. In general, following rules are followed for fragmentation. Molecular ion peak appears due to most stable ion. The order of stability of molecular ion is aromatic compound, highest value है उसकी, then conjugated polyenes, then alkenes, cycloalkanes, ketones, N-alkanes, ethers, carboxylic acids, alcohols and amines. The ions are also fragmented to give stable positive ion or stable neutral molecules or free radicals. अब फ्रेगमेंटेशन हो रहा है तो इन तीन वैरायटी के फ्रैगमेंट्स मिल सकते हैं. फॉर एग्जांपल R डैश C डैश प्लस है, होल प्लस है, दैट गिव्स R प्लस एंड C माइनस. देन R डैश C प्लस है तो R प्लस प्लस C डबल बॉन्ड C. देन dash C dash X whole plus gives rise to C plus plus X. R dash C dash X whole plus R plus C plus dash X or C double bond X plus. So these are the variety of stable positive ion or stable neutral ions or free radicals. Resonance stabilized ions are also formed preferentially. There are several fragment peaks in mass spectra which cannot be explained by simple cleavage of a parent compound. These fragment peaks result due to the rearrangements which occur during the fragmentation process. The rearrangements may be specific or random. The migration of a hydrogen atom from one part of the ion to another during fragmentation gives rise to specific
rearrangement. The random rearrangements take place by scrambling of H and C atoms within the cationic species. For this, McLafferty rearrangement is an example of specific rearrangement. Elimination is generally followed during rearrangement. Elimination भी होता है. The eliminated molecules are HX, H2O, HOR, H and R2 and X2. The 1,4 eliminations are most common with long chain alcohols. 1,3 elimination dominates in halides. 1,2 shifts are mostly observed, forming more stable species during the fragmentation. In the mass spectrum, a number of peaks are observed at integral m by E values, but some broad low intensity peaks at non-integral m by E values are obtained due to metastable ions. The rate of decomposition of an ion M1 formed in the ionization chamber is very fast, and before reaching the acceleration region, such ion will be decomposed. Only the fragment M2 will be accelerated and detected in the significant quantity. Ion that decomposes at an intermediate rate should show considerable intensity for both primary M1 and daughter M2 ions. Example is like that. M1 decomposes into M2 plus neutral fragments. With the intermediate rate of decomposition, a part of primary ions will decompose into fragments during the traveling through the accelerating region of the instrument. This kind of ion will be first accelerated as mass M1, decompose, lose some kinetic energy to the neutral fragment, and then accelerated and deflected as mass M2. Such kind of ions are recorded as broad peaks with low intensity at mass M and can be calculated by the following equation. M star is equal to M2 whole twice divided by M1. In general, metastable peaks M are found at 0.01 or 0.01 to 0.4 mass units higher than the calculated value. Metastable peaks help in detection of mechanism of fragmentation. The mass spectrum of an organic compound is represented graphically by plotting M by E versus relative abundance of or percentage of base peak. Base peak is the most intense peak of the spectrum. The value of 100 is arbitrarily assigned to the base peak, and the other peaks are assigned the proportionate values. So this is the principle in detail. इसमें हमने कोशिश की एग्जाम्पल्स के साथ प्रिंसिपल को समझाने की. मेन मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो है वो आयन में डिकम्पोज होता है. अगर ये बड़ा है तो ये फर्दर फ्रैगमेंटेड होता है, और
डिफरेंट वैरायटी के रिएक्शंस आपने देखे, एलिमिनेशन देखा, फ्रैगमेंटेशन के रूल्स देखे, और इन सब के बाद पीक्स कैसे ऑब्टेन्ड हुई ये आपने इसमें देखा है विद एग्जांपल. सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू. So if you like my lecture, please like it, share it and subscribe it. Thank you.